अथो देवी कवचम् अथो देवी कवचस्य ब्रह्मार्षिनुष्टुप्छन्द महिषमर्दिनादय देवता देवी पित्वर्थं जपे विनियोग। ॐ नमश्चण्डिका वै। ॐ शतानेक उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाङ्करं नृणां जन्ना कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ॐ ब्रह्मवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रं सर्वभूतोपकारकं देवास्त्रकवचं पुण्यं तच्च निष्पमहामुने। प्रथमं शैलपुत्रेति द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्रीति नवोदरिगापकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्नेन दह्यमानास्तु शत्रुमध्योगतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयात्वा शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे आपदं न जपस्वन्ति शोकदुःखभयङ्करीं यस्त्वक्त्वा स्मृतानित्रं तेषां वृद्धिं प्रजायते। प्रेतसंस्त्वाचु चामुण्डा वराही महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना नारसिंहे महावीर्या शिवदूते महाबला महेश्वरी विशारूढा कौमारीशिखी वाहना ब्रह्मे हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता लक्ष्मी पद्मासनदेवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ईते मातरौ सर्वः सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्यनानारत्नोपशोभिता श्रेष्ठैश्चैमैतिकै सर्वा दिव्यहारप्रलम्भिवी इन्द्रो नीलै महानीलै पद्मरागै सुशोभनै दृश्यन्ते रथमारूढा देव क्रोधाशमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्ति हलं च मुशलायुधं खेटकं तमुरं चैव परशं पाशमेव च कुन्ता ऊधं च खड्गं च शङ्गायुधो वनमुत्तमं द्वैतानं देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयतुम् आयुधानित्यं देवतानां हिताय वै। नमस्ते अस्त्र महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महत्साये महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धिनी प्राचां रक्षतु मामिन्द्री अगणिजाम् अगणिदेवता दक्षिणे चैव पाराहि नैऋतं खड्गधारिणे प्रतीच्यं वारणे रक्षेत् वायव्यं वायुदेवता उदिच्यं पातुं कैवेरी वैशाणं शूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्मीजमं रक्षे अधस्त्वाद् वैष्णवी तथा एवं दशोदिश रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया ममग्रदवातु विजया पातु पृष्ठतं वाजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च अपराजितं शिखां मे द्वैतीनि रक्षेत् उमावृद्धि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भोरमध्ये यशस्विनी नेत्रयश्च त्रिनेत्रा च व्योमघण्टा तु पार्श्वके शङ्किनी चक्षुषो मूर्धे सत्रयद्वारवासिनी कपलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले च शङ्करे नासिकायां सुगन्ध्वा च औतरष्ठे च चर्चिका अधरे च अमृतकला जिह्वायां च सरस्वती दक्षान् दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्ट्वा च महामाया च तालुके कामाख्यां चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनध्रयी नीलग्रीवा वही कण्ठे नुलिकां नलकुबरी स्कन्धय खर्गिणी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी
हस्त्रयो दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका च अङ्गुलीस्तथा नखान् सुरेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षणे नरेश्वरी स्तनो रक्षेत् महादेवी मनोशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुज्जं गुज्जेश्वरी तथा मेरुं रक्षतु दुर्गन्धा पायुं मे गुज्जवासिनी कट्टां भगवती रक्षेत् दूरमे मेघवाहना यंगे महाबला रक्षे जानू माधवो नायिका कुलफयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु कौशिकी पदाङ्गुलेशि धरी च तलं पातालवासिनी नखानदृष्टकराली च केशांश्चयूर्ध्वकेशिनी रोमकूपाणि कौमारी त्वच्चं जगेश्वरी तथा रक्तं मांसं वसं मज्जाम् अस्ति मेदश्च पार्वती अन्त्राणि कालरात्रि च पृत्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कक्षे चूडामणिस्तथा जलामुखे नखज्वालम् अवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि विरक्षेत् छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनं बुद्धिं रक्षेम्ने धर्मधारिणी प्राणाप्राणं तथा वैनम् उदानं च समानकं वज्रहस्त्वा तु मे रक्षेत् प्राणान् कल्याणशोभन रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्यं रजोत्तमस्यैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मरक्षतु पार्वती जसो कीर्तिं च लक्ष्मीश्च सदा रक्षतु वैष्णवी गौतमीन्द्राणि विरक्षेत् पशून् रक्षेत् च चण्डिका पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी धनेश्वरी धनं रक्षेत् कौमारी कन्नकं तथा मार्गं किमङ्करी रक्षेत् विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनस्त्वजत्स्वानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वरक्ष मे देवी दुर्गे दुर्गापहारिणी सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् इदं रहस्यं विपर्षे भक्तं तवोमयोदितं देवास्तु कवचं नैव रक्षितं तनूषुधि पादमेकं न गच्छेतु यदित्मन् भूमात्मन् कवचेनावृत्तं नित्यं यत्र यत्रावतिष्ठते तत्र तत्त्वार्थलाभसद्विजय सर्वकालिकं युवां यं चिन्तयते कामं तं तमप्नोति लीलया परम् ऐश्वर्यम् अतुलं प्राप्नोत विकल्पवान् निर्भयो जायते मत्र संग्रामे स अपराजितं त्रैलक्ष्ये च भवेत् पूजं कवचेनावृतं प्रमान् इदं तु देवकवचं देवनामोऽपि दुर्लभं जो पठेत् प्रयतनित्रं त्रिसन्ध्रं सद्रायान्वितः देवी वत्स भवेत् तस्य त्रैलोक्ये च अपराजितं जीवेद् वर्षशतं सग्रामम् अपमृत्युविवर्जितं नश्वन्ति व्याधय सर्वे लुता विस्फटकलयं स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं वापि च विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भुजराखे चरश्चैव कुलजासोपदेशजा सहजा कुलिकनागा डाकिनी सकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकीनस्य महारवा गोभूतपिशाचस्य जक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्मण्डा भैरवदायं नश्वन्ति दर्शनात् त्वस्य कवचेनावृत्तं हि य मानोन्नते भवेद्वाग्ग तेजविद्धि परा भवेत् जसर्विद्धि भवेत् पुंसा कृत्तिविद्धस्य जायते तस्मात् जपेत् सदा भक्तं कवचं कामदं मुने जपेत् सप्तशतीं चण्डी कृत्वा कवचमादितं निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धिचण्डीजापशमद्भवा यावद् भूमण्डलं दद्वे सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिनां जपो कर्तुः सन्तते देहान्ते परमं स्वानं यत्सुरोऽपि दुर्लभं संप्राप्नोति मनुष्य हसौ महामाया प्रसादतं तत्र गच्छति भक्त असौ पूर्णागमनं नहि लोभते परमं स्वानं शिवेन समतां व्रजेत् इति मार्कण्डेयपुराणे श्रीहरिब्रह्मविरचितं
देवा कवचं समाप्तम्।